Hello guys, I am Dr. Karunlata Shukla. Welcome to our channel Grassroots Maths classes. In this video, we will discuss about the division of the polynomial. So let's start. To discuss division of the polynomial, firstly we should know about the long division algorithm. By this algorithm, we know dividend is equals to divisor into quotient plus remainder. We denote dividend by the polynomial px, where px means a polynomial in the terms of the variable x, divisor by the polynomial gx, quotient by the polynomial qx, and the remainder by the polynomial rx. Division is possible if the degree of the dividend, that means the degree of the polynomial px, is greater or equal to the degree of the divisor, that means degree of the polynomial gx, and the polynomial gx does not equals to 0, and the degree of the divisor, that means the polynomial of gx, is strictly greater than the degree of the polynomial rx. Here we can say when px divided by gx gives qx as a quotient and rx as a remainder, and if rx is equals to 0, then the division is complete. But if rx does not equals to 0, तो यहाँ टू केसेस होंगे. फर्स्ट केस, इफ द डिग्री of gx is greater than the degree of rx, then division is complete. But if rx does not equals to 0 and the degree of the gx is less than the degree of the rx, then we divide again. तो ये प्रोसीजर है अगर आप कभी भी कोई डिवीज़न करते हैं तो, और इस मेथड को अगर आप यूज़ करते हैं तो इट इज़ नोन एज लॉन्ग डिवीज़न मेथड. सो ये पूरा प्रोसेस हम इन एग्जांपल्स के थ्रू क्लियर करेंगे. सो वी टेक एन एग्जांपल. इसे भी मैं रब कर देती हूँ, ओनली हमें इस स्टेटमेंट की ज़रूरत है. सो रिमाइंडर को हम यहाँ लिख लेते हैं, प्लस रिमाइंडर, दैट मीन्स पी एक्स इज इक्वल्स टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस रिमाइंडर. नाउ वी टेक एन एग्जाम्पल. 3x plus 4x square plus 1 divided by minus 1 plus x. So here px is equals to dividend, that means 3x plus 4x square plus 1, and gx means divisor is equals to minus 1 plus x. We have to arrange these polynomials in their standard format, that means in descending order of the degrees of the variables. So we have to write px is equals to 4x square plus 3x plus 1, and gx is equals to x minus 1. Now px divided by gx, so we have to write x minus 1 and 4x square plus 3x plus 1. Firstly, we divide the first term of the dividend by the first term of the divisor. So 4x square divided by x gives 4x. This is the first term of the quotient. So we write here 4x. Now 4x multiply with the divisor,
So 4x square minus 4x, and subtract this from the dividend. So write here 4x square minus 4x, subtract, एंड वी नो सब्ट्रैक्शन में आपका जो सेकंड टर्म होता है उसके साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये पॉजिटिव वैल्यू हमारी नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव होगी. अब बिकॉज 4x स्क्वायर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, सो ये कैंसिल हो जाएंगे, एंड प्लस 3x प्लस 4x, सो वी गेट प्लस 7x, एंड इस टर्म को हम कैरी करेंगे प्लस 1. नाउ अगेन डिवाइड फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर. So we get 7. This is the second term of the quotient. Now multiply 7 with the divisor. So 7 into x minus 1 gives 7x minus 7. 7x minus 7. Again subtract this term from the dividend. We get 8. Now this is a quotient polynomial, and our divisor is a linear polynomial, and the degree of the quotient constant polynomial is always less than the degree of linear polynomial. So we find here degree of gx is greater than the degree of rx, means division is complete. Here rx does not equals to 0 because we get rx is equals to 8. So rx is a constant polynomial, but degree of rx is less than degree of gx, so division is complete, and our quotient is 4x plus 7. Quotient is equals to 4x plus 7, and remainder is equals to 8. We can verify this division by using right hand side of this formula. So okay, we start the verification of this division. We have px is equals to this, gx is equals to this, and qx is equals to 4x plus 7, and rx is equals to 8. So taking right hand side of this, that means gx into qx plus rx. Gx means x minus 1 into qx means 4x plus 7 plus rx, that means 8. Now x into 4x plus 7 minus, because हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे, सो माइनस 1 इंटू 4x plus 7 plus 8, 4x square plus 7x minus 4x minus 7 plus 8 is equals to 4x square, 7x minus 4x, that means 3x, because 7 is greater than 4, so पॉजिटिव वैल्यू होगी ये, माइनस 7 प्लस 8, अगेन साइन डिफरेंट है, सब्ट्रैक्शन होगा, बट 8 इज ग्रेटर देन 7, तो वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, दिस इज px, लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड. तो ये वेरिफिकेशन है, तो आप डिवीजन के बाद वेरीफाई भी कर सकते हैं कि जो आपने क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड आउट किया है इट इज़ करेक्ट और नॉट. ये एक इजी एग्जाम्पल था. अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स के थ्रू इस मेथड को और भी क्लियर करेंगे. सो वी टेक अनदर एग्जाम्पल वेयर px इज इक्वल्स टू x to the power 4 plus 1. So we write here x to the power 4 plus 1 and gx is equals to x minus 1. ठीक है, बिकॉज यहाँ पर ये ऑलरेडी अरेंज्ड है, अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हमें इन्हें रीअरेंज करने की ज़रूरत नहीं है. सो डायरेक्ट हम डिवीज़न स्टार्ट करेंगे. x minus 1 and x to the power 4 plus 1, बिकॉज डिविडेंड को हम यहाँ लिखते हैं और डिवाइजर को यहाँ. नाउ अगेन सेम मेथड, डिवाइड फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड by the first term of the divisor. So we get
x cube. This is the first term of the quotient. Now multiply x cube with the whole term of the divisor. So x cube into x minus 1 is equals to x to the power 4 minus x cube. Subtract this term from the dividend, x to the power 4 minus x cube. We get x cube plus 1. Again divide first term of this dividend by the first term of the divisor. We get x square. This is the second term of the quotient, and multiply this term with the divisor. We get x cube minus x square. Subtract this from the dividend. So x cube minus x square, subtraction ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ साइन चेंज होगा, x square plus 1. Now again, because degree of this polynomial is greater than the degree of the divisor, that means degree of the dividend is greater than the degree of the divisor, तो division अभी continue process में रहेगा. Again divide first term of this dividend by the first term of the divisor. We get x. This is the third term of the quotient. Now multiply the third term of the quotient with the divisor. We get x square minus x. Subtract this from the dividend. We get, now here x minus 1, x plus 1. Degree of the dividend is equals to degree of the divisor. That means division one time और होगा यहाँ पर. So again divide first term of the dividend, that means x divided by the first term of the divisor. So we get 1. This is the fourth term of the quotient. Multiply this in with divisor. We get again x minus 1. Put here and subtract 2. This is a constant polynomial, and the constant and divisor is a linear polynomial. So we know degree of the constant polynomial is less than the degree of the linear polynomial. So our division is complete, and the quotient is x cube plus x square plus x plus 1, and rx is equals to 2. RXS does not equals to 0. इसीलिए आपको ये चेक करना है कि ऐसा तो नहीं डिवीजन आगे भी पॉसिबल हो, तो आप डिग्रीज के थ्रू चेक कर सकते हैं कि डिग्री ऑफ द रिमाइंडर इज लेस देन द डिग्री ऑफ द डिवाइजर. दैट मीन्स डिवीजन इज कंप्लीट. नाउ वी टेक अनदर एग्जांपल. अभी हमने जो दो एग्जांपल्स लिए हैं, उन दोनों एग्जांपल्स में हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिला. इसका मतलब ये है कि अभी x minus 1 ये जो दोनों जगह यूज़ हुआ आपका डिवाइजर इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस टर्म, इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस टर्म. बिकॉज अगर रिमाइंडर 0 होता तो इसको जब आप फैक्टराइज करेंगे तो उसमें ये टर्म जरूर इंक्लूड होगा, बट रिमाइंडर 0 नहीं है. दैट मीन्स ये टर्म इसके लिए एज अ फैक्टर वर्क नहीं करेगा. तो थर्ड एग्जाम्पल में देखते हैं कि हमें रिमाइंडर 0 मिलता है या नहीं मिलता है. सो वी राइट पी एक्स इज इक्वल्स टू 3x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर. ये थोड़ा सा लेंदी होगा, लॉन्ग होगा, सो हम थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट करते हैं. पी एक्स इज इक्वल्स टू 3x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 2x टू द पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, एंड gx इज इक्वल्स टू x माइनस 3. ठीक है, because this polynomial is not in their standard form, so we have to arrange this in descending order of the degree of the variables. So first term is 2x to the power 4, second term 3x cube, x to the power 4 x cube minus 26x square minus 5x plus 6. ये हमने अरेंज कर लिया. gx इज ऑलरेडी अरेंज्ड. नाउ स्टार्ट डिवीजन. x माइनस 3, 2x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब
minus 26x square minus 5x plus 6. Now divide first term of the dividend by the first term of the divisor. We get 2x to the power 4 by x is equals to 2x cube. This is the first term of the quotient. Now multiply divisor with this. So 2x cube into x minus 3, we get 2x to the power 4 minus 6x cube. Subtract this from the dividend. We get positive है दोनों, so 9x cube minus 26x square. Now again divide first term of the dividend by the first term of the divisor. So 9x cube upon x is equals to 9x square. This is the second term of the quotient, and multiply this with the divisor. We get 9x cube minus 27x square, and subtract this again from the dividend. We get x square, कॉपी करेंगे इस टर्म को. नाउ डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ द डिवाइजर, तो डिवीजन अगेन होगा. सो विद द सेम मेथड, first term of the dividend divided by the first term of the divisor, we get x. This is the third term of the quotient, and multiply this with x minus 3, that means with the divisor, we get x square minus 3x. Subtract this from this dividend, we get minus 2x now plus 6. So minus 2x, this is the first term of the dividend, divided by the first term of the divisor, we get minus 2. This is the next term of the dividend of the quotient. Now multiply this term with the divisor, we get minus 2x plus 6. Subtract this from the dividend, we get 0. Now this is the remainder. That means in this example we find remainder is equals to 0. So x minus 3 is a factor of px, and the quotient, that means qx, is also a factor of px. That means we write px is equals to gx into qx plus rx, but rx is equals to 0, so we get px is equals to gx into qx. That means gx and qx are factors of px. तो कभी फैक्टराइजेशन आप करना चाहते हैं, फैक्टर्स आपको फाइंड आउट करने हैं, तो आप बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड भी फाइंड कर सकते हैं. इसके अलावा हमारे पास स्प्लिटिंग मेथड भी होता है, अदर्स मेथड्स भी हैं. तो डिवीज़न मेथड के थ्रू भी हम फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं, बट केस कंडीशन हमारी क्या है कि जो रिमाइंडर है इस केस में 0 आना चाहिए, तभी ये टर्म्स आपके कोशेंट एंड डिवाइजर आर फैक्टर्स ऑफ द डिविडेंड. क्लियर? सो इन दिस डिवीजन वी गेट qx, that means quotient is equals to 2x cube plus 9x square plus x minus 2, and the remainder is equals to 0. तो तीनों एग्जाम्पल्स में ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि हमें डिवीज़न, लॉन्ग डिवीज़न मेथड के थ्रू कैसे करना है, क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, और डिवीज़न कब तक कंटिन्यू करना है, डिवीज़न कहाँ पर स्टॉप होगा और कब तक वो कंटिन्यू रहेगा. तो ये चीज़ भी क्लियर हो गई. आई थिंक ये आपको डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल में काफ़ी हेल्प करेगा, और हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम को भी डिस्कस करेंगे. टिल देन, गुड बाय एंड सेव एनवायरनमेंट, सेव वाटर. थैंक यू.